All right. So in the previous class, you have studied about normal equation. Okay. And in normal equation, we have performed the derivation for it. Okay. And I told it's an analytical approach. Okay. We have used metrics here for the representation. Things are same. Okay. This is your normal equation. Fine. And the way we approached to this problem deals with your matrices, how you organize the value beta naught, beta 1, that means the coefficients, and the inputs x0, x1 up to xn. Okay, so you have written y equal to beta transpose or theta transpose x. Okay, fine. And then what next you did is you have applied the cost function formula. That means predicted minus actual. That's a loss. That's what you are writing here. This is predicted, this is actual. Okay. So for every row, you are writing it. For every row. This is zeroth row, this is oneth row, this is mth row. Okay, these are the value of y or the output. You have written it as y ahead. Okay, see. And you have replaced h theta x0, h theta x1 with these terms theta transpose x0 because we have already got it above here. In general, x theta means theta transpose x. Just right now I told you, and it's an easy way to derive it. Here it is. Okay, so according to what you have achieved, you have put it here in the matrix form. Okay, and then you have expanded it. Here is the expansion. Okay, yesterday only I explained this thing. You have performed the expansion. It's it's your first row. Okay, that means 0 0 0. That means it's a your first row. We are representing it by 0, and x naught, x1, xn, these are the columns. Okay, so just assume it like this only. Okay, just like this. Okay, we are having zeroth row. This is x0, this is x1, this is x2, this is x3, this is x4. Okay, and all the entries present in it, whatever be. Then this will be the oneth row. Okay, 1. And whatever be the entries which are present in these columns. Okay, so that's what we did here. All right, and then the next what we wrote is, because it's been called as yp minus y ka square. The point is we don't have any option to differentiate it. Okay, we perform why we convert a term in high order because of differentiation. See, you are having MAE also, mean absolute error, YP minus Y. But when it comes to differentiation, now here will be a trouble because it's mod. Okay, because mod x can be written as minus x if x is less than 0,
and plus x if x is greater than 0. Okay, so this is how we have to split it. But when we square, then we don't have any issue. Yp minus y ka square, we don't have any issue. We can differentiate it. Same thing, it comes to us as we are having a term that's an entire determinant. And this is why, how we can differentiate it. So what they have done is, okay, let it be a square, and then a matrix square, we call it as matrix transpose into M. Okay, so the thing is, they told above term we can't perform the square. So what they did, we cannot simply square the above expression. This one we can't square. Okay, so instead, as a square of a vector or matrix is not equal to the square of each of its value, so to get the squared value, multiply the vector with its transpose. That's what I said. Multiply a vector by its transpose. Okay, so it took a vector and its transpose is calculated and multiplied by itself only. That is a square according to the property of matrix. Fine, got it. So that's what been written here. Okay, now let me share my entire screen. I have in the previous lecture told few more steps here. Okay, so you are having x theta minus y ka transpose x theta minus y. Now this transpose can be sent inside. Okay, so it will be like x theta ka transpose minus y transpose dot x theta minus y. Then x theta ka whole transpose, that means AB ka transpose, again we have to apply a property, that is theta transpose x transpose minus y transpose dot x theta minus y. And then we can perform the multiplication. So if you multiply, it will be like this: theta transpose x transpose dot x theta, then minus y transpose x theta, then minus theta transpose x transpose y, and then plus y transpose y. Okay, you can multiply and you'll get it. And then I told in the yesterday only, I explained that this is a scalar quantity. This is a scalar quantity. So they did manage to write it in this way. Okay, in this way they did manage to write it. All right, after differentiation. Okay, so if I need to differentiate, let's see, x transpose x will be kept as same, theta transpose theta, x transpose x will be same, theta transpose theta, I can make theta square. Okay, and this I can write minus 2 x transpose x, something like that. Okay, let me check it. Why? X transpose x, sorry, x transpose y. It can written as x transpose y, not x. And theta is also there. And this is y transpose y. So this term I am writing in this way. And this term, theta transpose theta, I clubbed to make theta square. Okay, fine. So then this is your cost function. I need to differentiate it, cost function with respect to theta. So if I differentiate with respect to theta, x transpose x is constant. Theta square differentiation is 2 theta. Here the theta differentiation, okay, it will be over, it will be 2 x transpose y.
and y transpose y, its differentiation with respect to theta is 0. Then you are having x transpose x 2 theta minus 2x transpose y. That's what you are having. Okay, and I told that we have to put this thing to 0. So 2x transpose x theta minus 2x transpose y equal to 0. 2x transpose theta, x also is here, equal to 2x transpose y. 2 se 2 cancel. Then I am having x transpose x theta is equal to x transpose y. Then x transpose x का inverse multiplied at both the side equal to x transpose x का inverse x transpose y. This will be an identity. Okay, inverse multiplied by the matrix. If I am having A inverse dot A, this will be an identity matrix. Okay, got it. So yes, this will be an identity, and I am having x transpose x ka inverse x transpose y. Finally, theta equal to x transpose x ka inverse x transpose y. So this is your normal equation. Yesterday also I told, and today I gave you a quick review of normal equation, a analytical approach to derive the value of parameter. So here theta is our parameter. Okay, we also calculated the value of parameter by an analytical approach by this way. Previously also we calculated the value of parameters theta, beta naught and beta 1. Okay, we did calculated. Here also we have calculated the value of parameter. Okay, so this is about normal equation for linear regression. Now I want to start a new topic, that is logistic regression. Logistic regression. All right. Well, as we have learned in linear regression, it is a regression algorithm which is used to predict continuous value. Here, target is continuous in nature. That means y, its value is continuous in nature. You very well know continuous means something which can be written in a frequency interval. Okay, fine. So, is this approach is applicable there also without continuous target or a value? Let us suppose I am having a data. Okay, I am having a data set. Okay, x naught, x1, x2. This is my target. I am having the values like this 0, 1, 0, 1, like this. Should I use linear regression here to predict 0 and 1? Is it possible? If I see the theme of linear regression, as I told right now, it is used for the prediction of continuous variables. My y, my output here is discrete in nature. It can be category also. So, will linear regression be successful to predict discrete or categorical values? That is a question. The linear regression equation is y equal to beta naught plus beta 1x. What we have calculated for beta naught is equal to y minus
beta 1, these both are bar. Bar means mean. This is value of beta naught, and beta 1 is x minus x bar y minus y bar divided by x minus x bar का square का summation. Here also mean came into existence. So ultimately, I have to take the mean of all the values, like for y also and for x also. For y especially, if I consider, I need to take the mean. But discrete में mean मतलब I will be getting 0 और 1 की जगह तो मुझे मिल जाएगा 0.12, कुछ भी मिलेगा 0.5. तो ये मेरा जो लीनियर रिग्रेशन है, that is going to give me continuous predictions, but I am expecting discrete या categorical values. तो ये कैसे possible हो पाएगा? ये मुश्किल है थोड़ा. थोड़ा क्या, मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज गोइंग टू गिव यू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, और ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, ये तो पहला फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इट्स गोइंग टू गिव कंटिन्यूस रिजल्ट्स. और आपको भी फॉर्मूला ऑल्सो मैंने लिख के बता दिया कि एक्स बार वाई बार और जो ये पैरामीटर्स का वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, ये आपको, आप मीन जब निकालोगे, यू विल डू दैट, सच काइंड ऑफ वैल्यूज ओनली यू विल गेट. ओके. सेकंड कंसर्न ये है कि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है, नॉट प्रोबेबिलिटी बेस्ड. अच्छा, ये मैं आई विल डिस्कस लेटर ऑन. थर्ड कंसर्न ये है कि व्हाट थ्रेशहोल्ड यू विल डिसाइड. यू विल डिसाइड कि भाई आई एम गेटिंग अ वैल्यू ग्रेटर देन 0.5, लेस देन 0.5, तो ग्रेटर देन 0.5 को 1 बोलूं, लेस देन 0.5 को 0 बोलूं. हु विल डिसाइड, मतलब ये थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होगा ताकि मुझे 0 या 1 मिल सके? इन माई इक्वेशन, इन माई लीनियर इक्वेशन ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि तुम्हें कोई थ्रेशोल्ड भी डिसाइड करना है. इट्स नॉट मेंशन. चलो, जैसे तैसे करते हुए मान लो, एनी हाउ एनी वे, आपने लीनियर रिग्रेशन यूज कर लिया बाइनरी क्लासिफिकेशन, फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन एनी हाउ यू आर यूजिंग लीनियर रिग्रेशन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन. 0 और 1 वाला था तो यहां कुछ मैनेज कर लिया आपने. मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए क्या करोगे? मल्टी क्लासिफिकेशन वेयर वी आर हैविंग मोर देन 2 क्लासेस, वी कैन हैव 1 2 3 4. ऐसी सिचुएशन में तो आपको इंटरमीडिएट वैल्यूज हाउ मेनी यू आर गोइंग टू गेट एंड हाउ मेनी थ्रेशोल्ड्स यू आर गोइंग टू डिजाइन, कैसे करोगे आप? यहां तो अटक गए अपन, वी आर स्टक. तो ये कुछ एक्सक्यूजेस हैं which are saying that linear regression cannot be used for classification, because linear regression give continuous outcomes. Linear regression is not probability based. Linear regression deciding threshold is tough. Also, multi classification is not possible here. So we require another algorithm which can perform all these tasks. So, sir, now also, okay, you are saying another algorithm. These are the drawbacks. These are the drawbacks of linear regression. The reason we are not using it for classification. So
As an introduction, as an introduction, I would say logistic regression is a supervised algorithm. Logistic regression is used for classification. Logistic regression performs best for binary classification. This is introduction. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर बोल तो क्लासिफिकेशन रहे हो एंड द नेम ऑफ द मॉडल इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन सर, नाम रिग्रेशन, बोल क्लासिफिकेशन रहे हो, ये कैसे? हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? So this is possible in a way like previously we were having only linear regression model and it was doing fine. It was doing fine. Then what happened was, instead of continuous outcomes we got discrete outcomes. So linear regression face challenged to predict the discrete outcomes. So the people decided कि एक काम करते हैं, डिस्क्रीट के लिए वी मेक न्यू फॉर्मूला, ओके, विच विल बी प्रोबेबिलिटी बेस्ड, विच कैन परफॉर्म बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन, एंड दैट विल नॉट गिव द कंटिन्यूस रिजल्ट. तो ऐसा कुछ बना लेते हैं. तो उन्होंने उसका नाम दिया लॉजिस्टिक. दे गेव इट इज नेम अ लॉजिस्टिक. लेकिन अच्छा, उस समय ऐसा नहीं था. उन्होंने इसी बात को ध्यान रखा कि डिस्क्रीट आउटकम्स हैं, तो लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिकली दे आर नॉट सेइंग इट एज अ क्लासिफिकेशन. बस उनका कंसर्न क्या था कि आउटपुट्स, द आउटपुट वी आर गेटिंग, वन इज कंटिन्यूस, वन इज डिस्क्रीट. तो उन्होंने बोला चलो कंटिन्यूस आ रहे, लीनियर रिग्रेशन वाज डूइंग, मान लो डिस्क्रीट आउटपुट रहा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर लेंगे. ओके, सो उस समय इतना जो है उन्होंने फोकस नहीं करा बात को कि ये क्लासिफिकेशन में इट कैन कम. ओके, फाइन. तभी दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज केप्ट अंडर लीनियर मॉडल. ठीक है, और इसको अभी तक सेपरेट ही नहीं करा. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ लीनियर मॉडल, इसी के अंदर रखा है उसे. जस्ट बिकॉज कि उस समय जब ये अल्गोरिदम दिया गया था, लीनियर रिग्रेशन की जो ड्रॉबैक थे ओवर डिस्क्रीट एंड categorical, just to overcome that drawback they have designed an algorithm which can produce respective outputs. तो उस समय उन्होंने इसको लीनियर के अंदर ही रखा, क्लासिफिक रिग्रेशन के अंदर ही दे केप्ट इट. क्लासिफिकेशन का आइडिया उस समय ऐसा नहीं था अलग से. तो तब से वो चली आ रही है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर मॉडल के अंदर ही आ रही है, दो इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. Okay, and it is probabilistic based algorithm. Okay, probability. अब probability कहाँ कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, that I will tell you, बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, तो भाई अब specifically we will be talking about logistic. In logistic regression, the relationship again, because supervised है ना, it is supervised algorithm.
So obviously we have to look out for relationship between x and y. So in case of logistic regression, it is saying that the relationship between x and y is based on logit function. लॉजिट फंक्शन। तो ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, ये लॉजिट फंक्शन है। व्हाट इट इज आई विल टेल यू। लॉजिट फंक्शन इज ऑल्सो सिग्मोइड, इसको सिग्मोइड भी बोलते हैं। ओके, so the relationship between x and y is logit, is defined by the logit function, and y the output, that is dependent variable. This is dependent, this is independent. So the output y, dependent variable. Our logistic regression predict y by using probability. So we will get the answer in form of probability, and probability lies between 0 to 1. So we will get the value of y in terms of probability. That is not as like linear. In linear regression, we did the same. Now we tried to find the relationship, that is your y equal to beta naught plus beta 1x, that is your linear in nature. Okay, we assume that it is linear in nature. We do have problems related to overfitting, we applied regularization. We do have polynomial relationship also, for that we applied polynomial regression. And now here the relationship mentioned is probabilistic. Okay, that means logistic logit function is used, and the prediction of y is done with the help of probability. Okay, and since we are getting the output y in terms of probability, your sigmoid function will convert these probabilities into binary values. Binary values it will convert. Okay, so you are getting binary means discrete. So overall output is discrete in nature, and that's what we are expecting. Okay, for classification we want this kind of outcome. So in case of logistic regression, it has been told that the independent variable and dependent variable are related by logit function. What it is, I will tell you. And here the prediction which we do, the output which we will get in prediction is probability. Probability, that is between 0 to 1. These probabilities are converted to discrete outcomes. Okay, like binary values. Okay, so remember, this is the relationship between x and y. I will write the formula. There are different types of logistic regression. We are having binary logistic regression, we are having multinomial logistic regression, we are having ordinal logistic regression. There are many types of logistic regression. Okay, like binary, multinomial,
That means binary classification, multi classification, ordinal, logistic regression. Like, okay, binary classification, we are having 0 and 1. Multinomial, we are having 1, 2, 3, and as many as multinomial. No? Multiple classes are there. Ordinal means, okay, you can have binary or multinomial, but these should be present in order. The classes, the categories should be in order. For example, if I do talk about grades, so grade will be A, B. They are in order. For example, I do talk about rank in institute or organization. So we are having tune, then clerk, then manager, then senior manager, then you will be having a head, and so on. So ये ऑर्डर है. तो आपके पास यू विल बी हैविंग आइदर बाइनरी आइदर मल्टीपल क्लासेस. लेकिन यदि ये ऑर्डर में हुआ, इफ इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर, तो वहां पर आप कहोगे इट्स एन ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोई अलग अलग फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई. नो, कोई डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे. वी आर नॉट डूइंग डिफरेंट फार्मूलाज. फॉर्मूला हमारा वही रहेगा. वो आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द डिफरेंट फार्मूलाज. हाँ, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा और डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट. ओके, चलिए ये बात हो गई. तो अभी आप समझ पाए हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर तो नहीं है. इन लीनियर रिग्रेशन इट वाज लीनियर. लॉजिस्टिक में तो लीनियर नहीं है, यहां लॉजिट रिलेशनशिप है. लॉजिट है. Okay, fine. This kind of relationship. That means there is a function called as logit function that I need to apply to define the relationship between x and y. फिर आपने पढ़ा कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी. द रिजल्ट विल बी अ प्रोबेबिलिटी. y की वैल्यू प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिस्टिक 0 से 1 के बीच की आएगी, जिसको आपको कन्वर्ट करना है इन डिस्क्रीट. ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी आउटकम्स में या वट एवर जो भी है. मल्टी क्लास है तो मल्टी क्लासेस में कन्वर्ट होगा ये. ठीक है. एंड ये टाइप्स है. दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. नाउ बिफोर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, व्हाट यू शुड रिमेंबर, व्हाट यू शुड रिमेंबर, आपको क्या अजम्पशन आने चाहिए. बिकॉज डेटा यू विल बी सॉल्विंग द एंटायर डेटा, लेकिन मॉडल डायरेक्टली यूज नहीं करते. इन लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो वी डू हैव एन अजम्पशन, है ना, वहां भी थे. हियर ऑल्सो वी आर हैविंग अजम्पशन. ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के. और वो क्या अजम्पशंस हैं देखिए. वेल, पहला तो ये कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. लीनियर नहीं, जरूरत ही नहीं है मेरे को. ओके, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. सेकंड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेसिडुअल्स का. रेसिडुअल क्या होते हैं? वाई पी माइनस वाई प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल. रेसिडुअल्स एरर होते हैं. इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी मेरे को जरूरी नहीं है. नो,
वहाँ पर था, वहाँ तो वी डिड टोल्ड कि जो फीचर्स भी जो हैं आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। देन यूनिफॉर्म वेरिएंस, जो वेरिएंस है, वेरिएंस यूनिफॉर्म, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। जो रेसिडुअल्स हैं उनका वेरिएंस यूनिफॉर्मिटी, ये भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये जितने भी अजम्पशंस हैं ये लीनियर के थे। हियर इट इज बीन नेग्लेक्टेड, बोला ये सब चाहिए नहीं मेरे को। व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इट इज सेड दैट जो लीनियर में भी है वो यहां पर भी है, वो ये है कि नो मल्टी कोलिनियरिटी कोरिलेशन, ये मेरे को नहीं चाहिए अमंग द फीचर्स। ये तो खैर हर जगह है, नहीं तो ओवर फिटिंग हो जाएगा। This algorithm is also saying that we don't want multi-collinearity correlation among the feature. आपस में x के जो भी जो ये हमारे फीचर्स हैं, देयर शुड नॉट बी नो कोरिलेशन। आपस में नो या लिटिल होना चाहिए, लिटिल या मिनिमम होना चाहिए। हाई कोरिलेशन होगा देन ड्रॉप इट, नहीं तो ओवरफिटिंग। उसके बाद इट हैज बीन टोल्ड दैट कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई वो लॉजिट होना चाहिए। इट शुड फॉलो लॉजिट रिलेशनशिप, एक्स एंड वाई लॉजिट होना चाहिए। लॉजिट रिलेशनशिप इसको उन्होंने ऐसा भी लिखा है, लॉग ऑफ ऑड्स। अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, लॉग ऑफ ऑड्स। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी लॉजिट एंड इट शुड बी लाइक लॉग ऑफ ऑड्स रिलेशनशिप, ये कहते हैं इसे। लॉग ऑफ ऑड रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होता है मैं बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डेटा सेट जो है, डेटा सेट शुड बी लार्ज। डेटा सेट शुड बी लार्ज, और छोटे डेटा पर डोंट वर्क ऑन स्मॉल डेटा। डेटा सेट शुड बी लार्ज, बड़ा होना चाहिए, तो जाके यू कैन अप्लाई द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। स्मॉल डेटा सेट डोंट, द डेटा सेट शुड हैव टू बी लार्ज इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Then they told that outliers should not be present. Outliers should not be present. आउटलायर भी हटाइए आप, नहीं चाहिए मेरे को। ये अजम्पशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। First, follow all these assumptions, then use logistic regression. Before that, if you are using logistic regression, you will fail. ठीक है, आपका मॉडल फेल हो जाएगा। ओके, गॉट इट। और as you have studied that this is the representation of linear regression, x and y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। दिस इज बीटा नॉट, एंड ये आपका स्लोप है बीटा वन, एंड यू आर राइटिंग इट एज y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, दिस इज x, दिस इज y, इन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद लॉजिट फंक्शन। लॉजिट फंक्शन ना थोड़ा सा एस जैसा दिखता है, इट लुक लाइक एस, ऐसा, वो ऐसा एस जैसा दिखता है। ओके, वो लाइन नहीं है, वो एस है, नॉन लीनियर है वो।
and its value lies between 0 to 1. 0 to 1. 0.5 per threshold. Any value less than zero point 0.5 will be 0, and any value coming more than zero point 0.5 will be 1. आपको लीनियर रिग्रेशन में पॉइंट ऐसे मिलते थे. लॉजिस्टिक में यू विल बी गेटिंग द आंसर इज आइदर 1, आइदर 0. ऐसा मिलेगा आपको. ये बीच में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको. नो, यू विल नॉट गेट एनी ऑफ द पॉइंट इन बिटवीन. यू विल ओनली गेट द पॉइंट्स आइदर ऑन एक्स, लाइक 0, और मतलब यहां पर 0 मिलेगा. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर 0 या 1. एक्स की वैल्यू और जो भी हो उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा. ठीक है, तो ये सिग्मोइड है, एस शेप का बनता है. और दिस विल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ना कि लीनियर वाली इक्वेशन. मैं आपको बता देता हूं, सिग्मोइड को लिखने का तरीका ये है. y इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻6, ये है. दिस इज सिग्मोइड फंक्शन, जो कि नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर बड़े काम की चीज है, देखेंगे आगे. ओके, यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? अंडरस्टूड? All right, let me stop presenting. Okay, let me stop recording.